Today we are going to start chapter 2nd. The name of chapter 2nd is magnetic effect of electric current. So first of all necessary to know about some important topic related to this chapter. This is some important points which is based on this chapter and most important for all of you for NCERT exam, CBSE examination and as well as your competition. So this is first topic is a Dutch physicist Hans Christian Ørsted observed that electricity and magnetism are related to each other. Hans Christian Ørsted, this is a scientist. First, he says that when current carrying conductor, this is current carrying conductor, when current flowing through this conductor, then magnetic effects produced around this conductor. And next, an electric current carrying with waves like a magnet so long as the electric current flows through it. An electric current carrying wire waves like a magnet means a current carrying conductor behaves like a magnet. When current flowing through the conductor, then around the current carrying conductor magnetic field produced. So in this way, this is electric current carrying wire behaves like a magnet, means attractive force produced. And next, a magnetic compass has a magnetic needle which are freely point towards north direction. This is a property of compass. Compass needle is a device in which the two needle of compass always indicate north and south pole, south direction. A magnet has attractive property. It attracts iron, steel, nickel and cobalt. Magnet has a attractive property which attract iron, steel, nickel and cobalt. And next, a freely suspended magnet always points in the north-south direction. I told you already, a freely suspended magnet always points. This is the property of magnet. This is always indicates or always point north and south direction. And next topic here, like magnetic poles repel each other and unlike magnetic poles attract to each other. Same as just like a charge. When charge, two like charges repel to each other and unlike charges attract to each other, same as two unlike magnetic poles attract to each other. There are two magnetic poles, north, south. North and north always repel to each other and north, south always attract to each other. Okay? And next, monopoles do not exist. Magnetic poles means magnet always consists two poles. It's south pole or north pole. मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होते हैं, ये एक पोल कंसिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता. एंड नेक्स्ट है लार्ज द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर स्ट्रॉन्गर, लार्जर द वैल्यू ऑफ करंट इन कंडक्टर स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. मीन्स यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ओके, let us discuss about magnetic field and magnetic field lines. So first, definition of magnetic field. This is a bar magnet and this is a magnetic field lines. So the space around the magnet in which the force of the magnet can be detected is called magnetic field of the magnet. Space around the magnet which experience some magnetic force is called magnetic field. And next, what is the magnetic field lines? So from this figure it is clear that magnetic field line is the closed curve, and if we draw the tangent of that magnetic field line, then it give the direction of the magnetic field at that point. And most important things here, magnetic field is stronger near the poles.
मीन्स पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है और इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Some important properties of magnetic field lines, most important properties. First property is the magnetic field lines are closed curve. From this figure it is clear that the magnetic field lines are closed curve. And next most important topic, inside the magnet, the direction of the magnetic field line from south to north, always inside the magnet the direction of the magnetic field lines are from south to north. This is south pole and this is north pole. And next topic, outside the magnet the direction of the magnetic field line, the direction of the magnetic field lines are from north pole to the south pole. Inside the magnet the direction of the magnetic field lines are from south pole to the north pole, and outside the magnet the direction of the magnetic field lines are from north pole to the south pole. And next, the magnetic field lines are closer in the region where magnetic field is strong and vice versa, means the magnetic field lines are closer where magnetic field is strong and magnetic field lines are minimum where magnetic field is minimum. Okay. Number 5 property, the magnetic field lines are parallel and equidistant to each other in the region where the magnetic field line is uniform throughout. This is the parallel magnetic field line and uniform magnetic field line. It is always equidistant to each other, means ये magnetic field line एकदम समान दूरी पे uniformly होती है. And next, the most important, the magnetic field lines never intersect each other. If two lines intersect each other, then there would be two direction of magnetic field lines intersect, and the two direction make which is impossible. When two magnetic field lines intersect to each other, then two magnetic field lines produce in compass needle, then it is not possible. Okay, so these are important properties of magnetic fields. Magnetic effect of current. Let us understand with this experiment. यदि हमारे पास कॉपर वायर हो जो बैटरी से जुड़ा हुआ करंट से, तो यदि हम इस वायर के पास एक कंपास निडल रखते हैं और इसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं, तो कंपास निडल सेम नॉर्थ और साउथ पोल में जैसे रहता है वैसे ही रहेगा. और जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो देखते हैं करंट फ्लो करने पे निडल में डिफ्लेक्शन होता है. ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था. अकॉर्डिंग टू द हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, that the magnetic compass needle got deflected when current carrying conductor produces magnetic field around it. So all these phenomena is called magnetic effect of current. When current flowing in conductor, then the magnetic field produced around the conductor, according to the Hans Christian Ørsted. So this is called magnetic effect of electric current. When current flowing through the conductor, then magnetic field produced around that conductor. Okay, so this is called magnetic effect of electric current, magnetic effect of current. From this Ørsted experiment, some important point clear here. First, a conductor carrying current produces magnetic field around it, means when current carrying conductor, मीन्स कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. और दूसरा, मोर द इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बनेगा. और नंबर 3, इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड. यदि हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. पहले फिगर से क्लियर हो रहा है
कि इसमें हमने करंट नहीं फ्लो किया है, तो ये अपने डायरेक्शन को मैग्नेटिक जो कंपास है वो अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहा है। और सेकंड, जब हमने करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में तो देखिए नॉर्थ का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ करंट के, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ निडल डिफ्लेक्ट किया। और नेक्स्ट जब हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हुआ तो साउथ की तरफ का निडल डिफ्लेक्ट हुआ। मीन्स इफ the direction of the electric current is reversed, then the direction of the magnetic field is also reversed. These are some important point related to the magnetic effect of current from the Oersted experiment. Okay, patterns of the magnetic field. It is important to study the magnetic field produced due to a straight conductor carrying current, means straight current carrying conductor, and a circular loop carrying current, and next solenoid carrying current. Number first, magnetic field due to a straight current carrying conductor. So let us discuss about this experiment. With this experiment, when current flowing in downward direction and when current flowing in upward direction, then magnetic field, how many types of magnetic field produced. So let us discuss with this example. First, the current in the conductor flows downward, then the direction of the magnetic field line in the clockwise direction. इस एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे से हम कोई कॉपर वायर को कनेक्ट कर करके बैटरी से इसके अंदर से ले जाते हैं, फिर उसके बाद जब इसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ हम कुछ छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रखते हैं, तो देखते हैं कि आयरन के टुकड़ों में ये कुछ लाइन से वो एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ मैग्नेटिक कंपास निडल रखते हैं, तो ये देखते हैं कि जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। मीन्स जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। और दूसरा, इफ द करंट इन द कंडक्टर फ्लोज अपवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज। सेम एज व्हेन करंट फ्लोज अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स जब हम करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो बनेगा। सेम वैसे ही तो इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में यदि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा।